surroundings. So this is a story of a fisherman who used to fish on the Loktak Lake, and what he had come through. Let's read it. Have you ever been to Cable Lamjau? Was it what it is famous for? It also abounds in waterfalls and fishes. Fishes are a main source of protein to human beings. The sangai is a very precious animal of Manipur. Think what you can do to save it. So here it is asking that, have you ever been to Cable Lamjau? And it is also famous for different fishes and waterfalls, and fishes are the main source of protein for human beings. And sangai is a very precious animal of Manipur, and we need to save it. Ibohal went to Loktak to catch fish. His boat sailed slowly in the water. After some time, the morning wind carried his boat to the floating grasses. The boat stepped there. He saw movement of the grass. A beautiful animal came out of it. He called out to the animal. So, Ibohol na Loktagda nga phaba chale maki hido tapna tauba. Adu matamda mase ishing manungda tauba ishing manungda satpa matamda napi maragda laga maki hido khamjanba. Napi maragda khamjanbaduda mana suddenly napi maragda animal ama uba. Aduga phajaba animal ama adudagi thokpa. He called out to the animal. Ibohol na animal da hare. Hello dear, are you the sangai? Don't run away, I'll do no harm to you. Sangai da hare me aidi nangki akaiba kaimta piroy nang aiki nang ishing dagi thologa aiki nagdala o haiba. Adu animal na muka kari khumi. Animal na adu da khumi. I'm sangai. I'm afraid of you. You often trap and catch us. So animal na haiba aiki mingse sangai ko bane aidi nang ki bane taibang mi se ki bane because they akoi the trick toroga bhajan bane ba. Adu haraga sangai se chentokre. The sangai then ran away. Ibohal was very unhappy. He came out from the place. He loved the animal. Aduga adu taraga Ibohal se thwayam nungai taba. Aduga adu mapamdagi mase tholokpa. Aduga mase hujiki animal do yengaga yam nungsiba. Hujiki animal ki matek ju paning ba, but adu do satkiba. He wanted to help the animal, but it had gone. On the way, there were many birds, white birds with long legs, played in the water. Many of them were standing in the water. Groups of birds were flying in the sky. There were herons. So, manalambi satpa matamda white machuki uchek yamna lerami. Aduga uchek ayamba singse lep lerami. Adu uchek singse heron ko bane. Adu dagi maki hido tapna thawi. Aduga there were many fishes in the lake. Many people were in the water to catch them. They used fishing net. Aduda maki hido tamna thauba matamda nga miyam se urami. Mi miyam se nga phabagi ada ngai lebane moiki fishing net do lalaga aduda nga miyam se phajanba. Ibohal spread his net in a long line. Then he pulled up the net. There were many fishes. He caught them one after another. Aduga Ibohal ju maki net do fishing net do tharaga nga mayam se phajanba. Aduga nga yamna pharame mana. He caught them one after another. At home, Ibohal thought of sangai. Yumda halakpagi kona Ibohal na hujiki phajaba animal matheng na bado napi maragda. Adu ki wakando adum khanba. He knew that many people killed the animal. He wanted to save them.
Cable Lamjau is a national park for the Sangai to live in. Men should protect them. Aduga masi khangi mi miyam se Sangai phara dia dum hatok pane masi moida safe toning ba. Cable Lamjau se national park amani Sangai miyam se ngak pirak pagidamagda moi kidamagda Cable Lamjau se national sanctuary oibane. Aduga mi miyam se adu miyam do protect obagi darkar oi. In the evening, Ibohol went to the club. He met the young boys. Nungdin mana club da chatpa. Club da chatpa duda naha angang miyam se loi thengnari. He told them the need for saving the Sangai. Mana miyam da hairami Sangai miyam se save tobagi da magda. Moi miyam se maki wadotaraga maki matek palani hai. They agreed to help him. They formed a committee to work for it. Ibohol became a member of the committee. Many people joined the committee to save the Sangai. Aduga kamay toraga moy ki Sangai ngak pirak pagi tauram haurino moise signboard makan ki Sangai save toro harak iraga tungan mapamda techanba. They taught the people not to kill Sangai. Moi miyam se mi miyam da Sangai se hat piganu tauraga tak pirakpa. Okay. Sina lesson number 19. Siki question answer jo ay pirakani pirak 3. See, right now what you do is that I will tell you the answers for this. If possible, you can write it down in your textbook itself. Textbook the karapik na iro siki nakan nakandane answer mayam do iro. Write down the answer beside these sentences. These sentences are not in proper order. You need to reframe the sentence and write it. A animal beautiful came out. So you write it as a beautiful animal came out. A beautiful animal came out. Next, the Sangai away ran. The Sangai ran away. Laisana, can you follow me? Right. The Sangai away ran. The Sangai ran away. Write it down beside this. Lot of spaces there. Asi mapam ahang ba mapam de ito. A animal beautiful came out. A beautiful animal came out. Number 3. Hello, you the Sangai are. You write down the answer. Hello, are you the Sangai? Hello, are you the Sangai? Hello, are you the Sangai? Next, they use nets fishing. You write down, they use fishing nets. They use fishing nets. Next, many people the committee joined. You write down, many people joined the committee. Many people joined the committee. Many people joined the committee. All the spellings are given here, so you can see the sentence and you can write it. Next, they wanted the Sangai to say. So you will write here, they wanted to save the Sangai. They wanted to save the Sangai.
They wanted to save the Sangai. Starting up with Hindi now, from lesson number 12. So this is lesson number 12. We read the other day also. So let's revise it once more. Since it is a very important lesson, let's revise it. Yaha kya hai? What is here? Yaha aam hai. Ay ki matan hai ro. Yaha kya hai? Yaha aam hai. Say all of you. Next, yaha kya hai? Yaha gulab hai. Next, yaha kya hai? Yaha sir hai. What is this? This is a head. Next, waha kya hai? What is that? Waha kya hai? Waha surya hai. That is a sun. Next, waha kya hai? What is that? Waha chand hai. That is a moon. Waha chand hai. Next, waha kya hai? What is that? Waha balti hai. That is a bucket. Next, ye kya hai? What are these? Ye ghare hai. These are pots. Next, ye kya hai? Ye kya hai? What are these? Astanisha, you are sick, I think so. What are these? ये क्या है? ये पुस्तकें हैं. These are books. ये पुस्तकें हैं. These are books. Next. ये क्या है? What are these? ये गायें हैं. These are cows. Gloria, respond. Next, वे क्या है? What are those? वे ढोलक है. Those are drums. Next, वे क्या है? What are those? वे जूते हैं. Those are shoes. Next, वे क्या है? What are those? वे तोते हैं. Those are parrots. Bibi Sananing Ombam, please respond. Next, यहाँ क्या है? What is this? यहाँ अंडा है. This is an egg. Next, ये क्या है? What are these? ये अंडे हैं.
These are eggs. Next, यह क्या है? What is this? यह कुर्सी है. This is a chair. Next, ये क्या है? What are this? What are these? ये कुर्सियां है. These are chairs. Coming to the next page. वह क्या है? What is that? वह घड़ी है. That is a clock. जिनमें लोग गोलमें, please concentrate. Next, वे क्या है? What are those? वे घड़ियां है. Those are watches. Next, वह क्या है? What is that? वह ठेला है. That is a puller. Cart puller or puller. Next, वे क्या है? What are those? वह ठेले है. Those are carts. Next, यह क्या है? What is this? यह मोरा है. This is a sitting place. वह क्या है? What is that? वह गमला है. That is a flower pot. Next, ये क्या है? What are these? ये फूल है. These are flowers. वे क्या है? What are those? वे बकरे हैं. Those are goats. Let's read the spellings, okay? Ay ki matan banan meyam se hayro ko. Waha waha. Say waha waha. Okay, next. Sa u की मात्रा या रिफ सूर्य. हा ऐ की मात्रा है. नेक्स्ट, या हा यहा. ग उ की मात्रा ल आ की मात्रा ब गुलाब. हा ऐ की मात्रा है. Next, say the spelling. Am. Scrolled up. स छोटी ई की मात्रा र सिर. स उ की मात्रा या रिफ सूर्य. Let me expand it for you so that you can see it. It's running so fast. Next. च आ की मात्रा चांद्र बिंदु द चांद. नेक्स्ट, ब आ की मात्रा ल ट बड़ी की मात्रा बाल्टी. नेक्स्ट, घ डॉट बिंदु ए की मात्रा घरे. नेक्स्ट, हा आई की मात्रा अनुस्वार है. नेक्स्ट,
प उ की मात्रा आधा स त क ए की मात्रा अनुस्वार पुस्तकें. अगेन प उ की मात्रा आधा स त क ए की मात्रा अनुस्वार पुस्तकें. It's running so fast. Next, ग आ की मात्रा य ए की मात्रा अनुस्वार गाए. ग आ की मात्रा य ए की मात्रा अनुस्वार गाए. I'm teaching you so that you will repeat it after me, Banika. If you see at the camera and see it like a Dumbo, you will never learn anything. Please repeat it after me. ग आ की मात्रा य ए की मात्रा अनुस्वार गाए. नेक्स्ट, ढ ओ की मात्रा ल क ढोलक. नेक्स्ट, ज उ की मात्रा त ए की मात्रा जूते. नेक्स्ट, व ए की मात्रा वे. आधा क य आ की मात्रा क्या. हा आई की मात्रा अनुस्वार है. वे क्या है. The answer is व ए की मात्रा वे. त ओ की मात्रा त ए की मात्रा तोते. Clara Moirangtham, please respond. त ओ की मात्रा त ए की मात्रा तोते. हा आई की मात्रा अनुस्वार है. नेक्स्ट, यहाँ यहाँ. आधा क य आ की मात्रा क्या. हा आई की मात्रा है. यह क्या है. The answer is यहाँ यहाँ. Kesham Aingbi, Linthoy Ganbi Yumnam, please respond. यहाँ यहाँ. आ मुद्धना ड आ की मात्रा अंडा. हा आई की मात्रा है. नेक्स्ट, य ए की मात्रा ये. Tiana Lausambam, respond. I can see. आधा का य आ की मात्रा क्या. ये क्या. हा आई की मात्रा है. ये क्या है. What are these? या ए की मात्रा ये. आ मुद्धना ड ए की मात्रा अंडे. हा आई की मात्रा अनुस्वार है. ये अंडे है. Coming to next line. यहाँ यहाँ. Repeat. आधा का य आ की मात्रा क्या. हा आई की मात्रा है. यह क्या है. What is this? Next, the answer is यहाँ यहाँ.
का उ की मात्रा, स आ की मात्रा, स बड़ी ई की मात्रा, रिफ कुर्सी. Again, I'll repeat the spelling. का उ की मात्रा, सा बड़ी ई की मात्रा, रिफ कुर्सी. हा आई की मात्रा है. This is a chair. Matanda, next one. या ए की मात्रा ये. आधा का या आ की मात्रा क्या? Repeat after me, girls. हा आई की मात्रा अनुस्वार है. ये क्या है? What are these? या ए की मात्रा ये. का उ की मात्रा, सा छोटी ई की मात्रा, रेफ या आ की मात्रा, चांद्र बिंदु, कुर्सियां. हा आई की मात्रा अनुस्वार है. ये कुर्सियां है. These are chairs. Next line. Magdalene Golme. वहा वह. आधा का या आ की मात्रा क्या? हा आई की मात्रा है. वहा क्या है? What is that? Answer is Lanchen Bioinam, Loila, Lolia, Lamganbi, Loi Kumo. Please respond. Waha waha. खा डॉट बिंदु बड़ी की मात्रा घड़ी. हा आई की मात्रा है. वहा घड़ी है. That is a clock. Next. वह एक की मात्रा वे. आधा का या आ की मात्रा क्या? हा आई की मात्रा अनुस्वार है. वे क्या है? What are those? वह एक की मात्रा वे. घा डॉट बिंदु छोटी ई की मात्रा या आ की मात्रा, चांद्र बिंदु, घड़िया. हा आई की मात्रा अनुस्वार है. वे घड़िया है. Those are clocks. Now, since we have already read it, okay, in the sentence before, I have explained it to you in English, the meanings. Now, let us read the spellings of these pictures and the words written here. Tha ए की मात्रा, la आ की मात्रा, ठेला. Haro, say. ठा एक ही मात्रा, ला एक ही मात्रा, ठेले. Gaijin Liu, Kamsan. Repeat what I am saying. ठा एक ही मात्रा, ला एक ही मात्रा, ठेले. Next. मा ओ की मात्रा, ढोयर बिंदु, आ की मात्रा. This is ढोयर बिंदु, okay. मोरा. मा ओ की मात्रा, ढोयर बिंदु, आ की मात्रा, मोरा. Next. गमला आ की मात्रा, गमला. Next. फ उ की मात्रा, ल, फूल. Next. ब क र ए की मात्रा, बकरे. Now, today your Madam Rafat have uploaded the question and answer of lesson number 12. So let's read it. Aiki matan, please repeat it, okay?
यहाँ क्या है? यहाँ बिल्ली है। ब छोटी ई की मात्रा आधा ल बड़ी ई की मात्रा बिल्ली। हरो। नेक्स्ट, यहाँ क्या है? यहाँ तोता है। त ओ की मात्रा त आ की मात्रा तोता। ता ओ की मात्रा त आ की मात्रा तोता। Alia Ningthojam, concentrate. Next, यहाँ क्या है? यहाँ बाघ है। ब आ की मात्रा घ बाघ। नेक्स्ट, ये क्या है? ये. Now ये is plural form. यहाँ is singular form. In the answer of singular form, there is no bindu, okay? But when you are speaking in plural form, ya एक ही मात्रा ये, then the answer, in the answer है, there will be a bindu, okay? So ये क्या है? Say, all of you. ये आंखें हैं. Say the spelling after me. आ चंद्र बिंदु, खा एक ही मात्रा अनुस्वार आंखें. आ चंद्र बिंदु, खा एक ही मात्रा अनुस्वार आंखें. Why so many of you are without your videos? 100 times I tell you to turn on your video. And here हा ऐ की मात्रा अनुस्वार है. ये आंखें हैं. नेक्स्ट, ये क्या है? What are these? ये किताबें हैं. का छोटी ई की मात्रा ता आ की मात्रा ब ए की मात्रा अनुस्वार किताबें. Lakshmi Thokcham, sit straight. हाँ ऐ की मात्रा अनुस्वार है. नेक्स्ट, ये क्या है? ये कुर्सियां है. का ऊ की मात्रा का ऊ की मात्रा सा छोटी ई की मात्रा रेफ या आ की मात्रा चंद्र बिंदु कुर्सिया. I repeat the spelling again. का ऊ की मात्रा सा छोटी ई की मात्रा रेफ या आ की मात्रा चंद्र बिंदु कुर्सिया. हा ऐ की मात्रा अनुस्वार है. नेक्स्ट, वहाँ क्या है? What is that? वहाँ कलम है. नेक्स्ट, वहाँ क्या है? वहाँ कबूतर है. कलम कलम. का बा ऊ की मात्रा तर कबूतर. नेक्स्ट, वहाँ क्या है? What is that? वहाँ हाथी है. That is an elephant.
हा आ की मात्रा, था बड़ी ई की मात्रा, हाथी. Next, plural form. वे क्या है? What are those? वे मोरे है. माँ ओ की मात्रा, भौरबिंदु ए की मात्रा, मोरे है. हाँ ऐ की मात्रा, अनुस्वार है. नेक्स्ट, वे क्या है? वे मछलियां है. म छ ल छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, मछलियां. हा ऐ की मात्रा, अनुस्वार है. नेक्स्ट, वे क्या है? What are those? Shenas, Kumo, please respond. वे फल है. Those are fruits. फल फल. हा ऐ की मात्रा, अनुस्वार है. Okay, now the remaining we will do it in the next class. So children, today